Hello students, now we'll discuss types of dividend. Types of dividend. So cash dividend, uh, it is mentioned. Now stock dividend. Stock dividend, it is paid in the form of company stock due to rising of more finance. ओके किस फॉर्म में दिया जाता है? कंपनी स्टॉक के फॉर्म में. अंडर दिस टाइप कैश इज रिटेन्ड बाय बिजनेस कंसर्न. कैश तो रख लिया जाता है बिजनेस कंसर्न से द्वारा. इन स्टॉक डिविडेंड में भी बोनस इशू. दिस इशू इज गिवन ओनली टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. ओके जो कि बिजनेस कंसर्न के शेयर होल्डर्स हैं, नाउ एग्जिस्ट कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशन. A stock dividend is the issuance by a company of its common stock to its common shareholders without any consideration. ओके तो स्टॉक डिविडेंड दिया जाएगा कॉमन शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, बिना कुछ भी लिए. ओके मतलब कि उनको अलग से कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ द कंपनी issues less than 25% of the total number of previously outstanding shares. Listen again. If the company issues less than 25%, जो कि पिछले आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे ना, उनका 25%, पिछले आउटस्टैंडिंग शेयर्स के 25% से कम. ओके ना. इफ कंपनी इश्यूज लेस देन दैट 25%, treat the transaction as a stock dividend. Clear? If the transaction is for a greater proportion of the previously outstanding shares, देखें 25% से कम है तो treated as a stock dividend. If greater proportion, then treat the transaction as a stock split. To record a stock dividend, transfer from retained earning to capital stock. ये रिकॉर्ड की बात हो रही है स्टॉक डिविडेंड के. ट्रांसफ़र फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, जो अर्जित आय होगी ना, उससे टू द कैपिटल स्टॉक. एंड एडिशनल पेड इन कैपिटल अकाउंट्स ऑन अमाउंट इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ एडिशनल शेयर्स इश्यूड equals fair value of additional shares issued. The fair value of additional share issued is based on their fair market value. ओके जो कि मार्केट वैल्यू है, अभी की जो वैल्यू है, when the dividend is declared, जबकि घोषणा की कि डिविडेंड मिलने वाला है एज पर ऑन दिस डेट, ऑन दिस परसेंटेज, एज पर कंडीशंस. ओके सो फेयर मार्केट वैल्यू पर बेस्ड होगा. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी डिविडेंड. प्रॉपर्टी डिविडेंड्स आर पेड इन फॉर्म ऑफ सम एसेट्स अदर देन कैश. यहाँ कैश के अलावा एसेट्स की फॉर्म में दे दिए जाता है, तो ये है प्रॉपर्टी डिविडेंड.
It will distribute under the exceptional circumstance. This type of dividend is not published in India. A company may issue a non-monetary dividend to investors, अमौद्रिक लाभांश पैसे के रूप में नहीं दिया जाता, बट और तरीके से दिया जा रहा, लाइक एन एसेट, लाइक एन प्रॉपर्टी. भारत में प्रसिद्ध नहीं है ये वाला टाइप. Rather than making a cash or stock payment, record this distribution at the fair market value of the assets distributed. Since the fair market value is likely to vary somewhat from the book value of the assets. ये तो आप लोग जानते हैं कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है ना. The company will likely record the variance as a gain or loss. So next is scrip dividend. Scrip dividend. A company may not have sufficient funds to issue dividends in the near future. Okay, अगर sufficient funds नहीं हैं, काफ़ी मात्रा में फंड्स नहीं हैं डिविडेंड इशू करने के लिए, सो इंस्टेड इट इशूज अ स्क्रिप डिविडेंड. तो क्या करती है कंपनी? स्क्रिप डिविडेंड इशू कर देती है, विच इज़ इसेंशली अ प्रोमिसरी नोट. ये आप लोग पढ़ चुके हैं प्रोमिसरी नोट्स, है ना, कमर्शियल बिल्स, पेपर फॉर्म्स. तो प्रोमिसरी नोट विच में और मे नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के साथ भी हो सकता है, इंटरेस्ट के बिना भी हो सकता है. तो विच इज़, दोबारा सुने, विच इज़ इसेंशली अ प्रोमिसरी नोट टू पे शेयर होल्डर्स एट अ लेटर डेट. दिस डिविडेंड क्रिएट्स अ नोट पेबल. स्क्रिप डिविडेंड. Next one is liquidating dividend. Liquidating dividend. When the board of directors wishes to return the capital originally contributed by shareholders as a dividend, it is called a liquidating dividend, and may be a precursor to shutting down the business. ओके, जबकि लिक्विडेट करना चाहती है कंपनी एंड तो लिक्विडेटिंग डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को. Accounting for a liquidating dividend is similar to the entries for a cash dividend. ओके, सेम ही होगा कैश डिविडेंड की तरह ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग, एक्सेप्ट दैट द फंड्स आर कंसिडर्ड टू कम फ्रॉम एडिशनल पेड इन कैपिटल अकाउंट. So this is liquidating dividend. Next is regular dividend. Regular dividend. By dividend we mean regular dividend paid annually, proposed by the board of directors and approved by the shareholders in general meeting. मीटिंग के दौरान ही ये डिसाइड हो गया था, प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अप्रूव कर दिया था शेयर होल्डर्स ने. ठीक है ना, कि एनुअली पे किया जाएगा. रेगुलर मीन्स सेम परसेंटेज होगी, निर्धारित परसेंटेज होगी, निर्धारित पता है कि इतना डिविडेंड. ठीक है, तो रेगुलर होगा. It is also known as final dividend because it is usually paid after the finalization of accounts. Okay, regular dividend is also called final dividend. It is generally paid in cash as a percentage of paid up capital.
देखें किसकी परसेंटेज, पेड अप कैपिटल की, से 10% और 15% ऑफ कैपिटल। लाइक 1 करोड़ की कैपिटल है, हम 10% अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो 10 lakhs हो जाएगी। ओ सॉरी, 1 करोड़ बोला ना, हाँ 1 करोड़। Sometimes it is paid per share. No dividend is paid on calls in advance or calls in arrears. कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर के केस में भी कोई डिविडेंड नहीं पे किया जाता। द कंपनी इज हाउ एवर ऑथराइज्ड टू मेक प्रोविजंस in the articles prohibiting the payment of dividend on shares having calls in arrears। तो इससे भी रिलेटेड जो प्रोविजंस होंगे वो आर्टिकल्स में पहले ही स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं। So it is regular dividend. Now, interim dividend. If articles so permit, the directors may decide to pay dividend at any time. अगर आर्टिकल्स में है ओके तो डायरेक्टर्स किसी भी टाइम पे कर सकते हैं डिविडेंड बिटवीन द टू एनुअल जनरल मीटिंग बिफोर फाइनलाइजिंग द अकाउंट्स। ओके, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से ना पहले जो जनरल मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग, तो डिसाइड किया जा सकता है कि भी किस टाइम पे किए हैं करने हैं। इट इज़ जनरली डिक्लेयर्ड एंड पेड व्हेन कंपनी हैज़ अर्नड हैवी प्रॉफिट्स। कब डिक्लेयर कर किए जाते हैं, जबकि लगे कि हैवी प्रॉफिट्स होने वाले हैं, एब नॉर्मल प्रॉफिट्स होने वाले हैं ड्यूरिंग द ईयर एंड डायरेक्टर्स विश टू पे द प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स। Such payment of dividend in between the two annual general meetings before finalizing the accounts is called interim dividend. Listen again. Such payment of dividend in between two annual general meetings, मीटिंग होगी एनुअल, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, फाइनलाइजिंग होगी अकाउंट्स की, तो इसी दौरान हम कहेंगे सच पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन बिटवीन द टू एनुअल जनरल मीटिंग्स बिफोर फाइनलाइजिंग द अकाउंट्स इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड, अंतरिम लाभांश। No interim dividend can be declared or paid unless depreciation for the full year. Depreciation for the full year has been provided for. Okay. It is an extra dividend paid during the year requiring no need approval of the annual general meeting. ये एक्स्ट्रा डिविडेंड होता है और इसके लिए ना किसी एनुअल जनरल मीटिंग के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ पेड इन कैश। So next is dividend in asset form. If company is unable to pay dividend in cash or share form, company can pay dividend by giving any his asset as gift form. Okay, asset as a gift दे दी है,
then this type of dividend will be asset form dividend. Clear? Asset. Then final dividend is given after declaring the final result of the company. कब डिक्लेयर किया जा रहा है? फाइनल रिजल्ट ऑफ कंपनी के कंपनी का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मालूम है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होते हैं एंड बैलेंस शीट्स होती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना, फाइनल अकाउंट्स. Final and proposed dividend will same if interim dividend is given in trial balance. देखें, फाइनल एंड proposed dividend सेम होंगे, जबकि जो इंटरिम डिविडेंड है ना, ट्रायल बैलेंस में पहले से ही दिया जा रहा है, शो किया जा रहा है. ओके, एंड फाइनल डिविडेंड इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. देखें, इंटरिम डिविडेंड तो कर दिया ट्रायल बैलेंस में शो, और फाइनल डिविडेंड कर दिया ट्रायल बैलेंस के बाहर शो, जो कि एडजस्टमेंट में दिया जाता है. ओके, सो नेक्स्ट इज unclaimed dividend. Unclaimed dividend is that dividend which declared by not claimed by a specific shareholder. Not claimed by a specific shareholder. Suppose information of dividend was sent, but letter was returned to company due to any reason. ठीक है, this is unclaimed dividend. Now bond dividend. Bond dividend is also known as scrip dividend. Scrip dividend. If the company does not have sufficient funds to pay cash dividend, the company promises to pay the shareholders at a future specific date. अगर अभी कैश डिविडेंड नहीं दे पाती है कंपनी, तो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक डेट को पे किए कर देगी, प्रॉमिस किया है कंपनी ने, ठीक है, कि स्पेसिफिक इन एट अ फ्यूचर स्पेसिफिक डेट it will be paid with the help of issue of bond. So these are the types of dividend. Okay, thank you.